Hello students, how you all are? Today in this video lecture we are going to start with very first chapter of class +1, that is set. So talking about this chapter is very easy chapter. We can easily learn the things regarding this chapter. And in this video series we are going to deal with each and every term in detail about set. Clear? So today in this particular video we are going to start with few of the concepts regarding this chapter, that is what is a set, then tabular form, roster form belongs to, and few questions with that particular topic. Clear? So let us start with our first topic. What is set? So talking about set, it is a collection which is well defined, well distinguishable, and non-repeatable. Repeatable. Now, what is said? It is a collection. Now, what is collection? अब कुछ भी लेके कोई भी चीज़ लेके उन्होंने अगर इकट्ठे कर दिए, we are gathering the things together, that is called to be collection. Like two marker, this is a collection. Like things in this room, this is a collection. Like students of +1 class, this is a collection. Like any union, that is collection. Like कईयों को coins की collection होती है, कईयों को stones की collection होती है, कईयों को all things की collection होती है, कईयों को notes की collection होती है. Collection क्या simply collection जो तुम्हें पता है, that is a taking few things together in a single thing. But ये हर तरह की collection set नहीं होती. Otherwise वैसे collection ही कहते हैं. Why we call it set? Because collection ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ collection ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ well defined ਹੈ, well distinguishable ਹੈ ਤੇ non repeatable ਹੈ, that collection is called to be set. Let us discuss all terms one by one. Well defined. So what is the meaning of well defined? Well defined ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇ. Only one answer everyone is giving for a particular thing. For example, right now lockdown in India is due to which disease? देखो सारा का आंसर आ रहेगा कोविड, कोरोना. yes or no? So that is well defined. भी ये लॉकडाउन क्यों चल रहेगा? Now question is, who is the Prime Minister of India? सब आंसर क्या है? Mr. Narendra Modi. That is again well defined. Yes or no? But अगर मैं कहूँ, who is the famous actor in India? देखो, although it may be for some persons जो किसी चीज़ दे विच उस चीज़ ਨੂੰ define ਕੀਤਾ ਗਿਆ, this is number 1, number 2, but everyone has their own opinion. किसी ਨੂੰ कोई ਵਧੀਆ लग रहा है, किसी ਨੂੰ कोई ਵਧੀਆ लग रहा है, किसी ਨੂੰ कोई ਵਧੀਆ लग रहा है. कोई कहूगा सलमान खान, कोई कहूगा शाहरुख खान, कोई कहूगा अमिताभ बच्चन and all. Everyone has their own opinion. Answer unique नहीं हैगा. Who is the top cricketer of the world? कोई सचिन ਨੂੰ कहूगा, कोई AB de Villiers ਨੂੰ कहूगा, कोई पीटरसन ਨੂੰ कहूगा, कोई किसी ਨੂੰ कहूगा. Everyone has their own answer. Okay, one more. Who is the most dangerous animal on the earth? Who is? कोई कहूगा crocodile, कोई कहूगा dinosaur, कोई कहूगा snake, कोई एक चूहे तो भी डर जाता है. सो इट डिपेंड्स पर्सन. ये कुछ चीज़ें हैं जी ने. आई सेइंग डेंजरस एनिमल, आई एम सेइंग फेमस क्रिकेटर, आई एम सेइंग फेमस एक्टर, जिहदे लिए आंसर यूनिक नहीं है. दे आर नॉट वेल डिफाइंड. बट इफ आई एम सेइंग विच सब्जेक्ट करंटली वी आर स्टडिंग, इट इज़ वेल डिफाइंड. इट इज़ मैथमैटिक्स. Is that clear? So well defined क्या? Something जिहदे बारे तुहानूं पुछिया जावे तां तुहाडा एक यूनिक आंसर आवे. In which country we are living? India. Yes or no? So well defined किया for which
everyone is giving same answer, that collection. Secondly, well distinguishable होगी, जो चीज़ well defined होगी उसकी एक बखरी पहचान होगी. For example, if I'm saying how many alphabets are there in English? 26. Out of them, vowels कितनी है? 5. And consonants कितनी है? 21. Now, tell me, are they well defined? Question is, are they well defined? Just they are. Vowels कितने कितने होंगे? Come on. A, E, I, O, U. ਹੁਣ मैं किसी ने जाके पूछा vowels कितने letters ने, तो कोई कहूँगा P, कोई कहूँगा R. Not at all. Everyone is going to say A, E, I, O, U. It's a collection which is well defined. Yes or no? Likewise, consonant 21 is a big thing to write over there, but 21, the 21 consonants, we know that. Now, we were on the second point, well distinguishable. What is the meaning of well distinguishable? Let me write again the word same, English. Can you tell me how many vowels are there? Yes. 1, N, nahi, G, nahi, L, nahi, I, yeah, it is, S, nahi, H, nahi. So there are 2 vowels. How many consonants are there in this particular word? 1, 2, 3, 4, 5. 5 consonants. That means, जो चीज़ well defined से, I can easily distinguish. Well, इतने कितने vowels are? Only 1. How many vowels are there? Only 1. How many vowels are there? 1, 2. वो अपनी एक वक्री पहचान रखता है. If it is standing in the bunch of things, तो हम लोग easily distinguish कर सकते हैं. Like I said, who is the Prime Minister of India? अगर there is a group of 1,000 people, can I distinguish that particular person? बिल्कुल. So that is well distinguishable. Well defined, जिसली आंसर सेम होवे, तो जिसनों easily बाकी चीज़ां नालों बखरा किया जा सके. And well non repeatable दा किया set दे विच ਆਪਾਂ कोई भी चीज़ repeat नहीं करें. That's a simple thing. So something, a collection, not all collection, a particular collection which is well defined, which is well distinguishable, and which is non-repeatable is called to be set. Is that clear or not? What is set? So set is something which is well defined, well distinguishable, and non-repeatable. Now next question comes, अब फिर represent क्यों करते हैं? तो जब भी एक set ਨੂੰ represent करना, we use capital letter for that. And set the जो भी elements होंगे, elements मतलब the part of collection. For example, vowel ਦੇ ਵਿੱਚ element किसी के A, E, I, O, U. There were 5 elements. तो elements हमेशा इन्ना bracket च बंद किए जाएंगे. These are called to be curly brackets. तो जो भी मैं एक सेट ਨੂੰ रिप्रेजेंट करना, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस विद अ कैपिटल लेटर, लाइक आई एम सेइंग दिस इज इक्वल्स टू ए. सो ये सेट किया सेट ए, तो एलिमेंट्स हमेशा करली ब्रेसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ. क्लियर और नो? लेट मी राइट वन पर्टिकुलर सेट. So can you guys tell me, it is a set? Yes, it is a set. A, E, I, O, U. All are vowels. So set of vowels represented by letter A enclosed between curly brackets. Okay, let me write again one more thing. It is a set. No, not at all. Reason being here, although letters well defined are, also letters well distinguishable are, पर they are repeating. A देखो कितने बार repeat हो रहा है? 2 बार.
ई भी कितने बार रिपीट हो रहा 2 बार। सो ये सेट नहीं है। अगर इनको प्रॉपर सेट फॉर्म च लिखना गा, सो व्हाट आई विल डू, आई विल omit the repetition A E I O U. Now I will make it a set. Is that clear or not? What is a set? Everyone? Very good. Now next, I think चीज़ दसो मैनू, हाँ ध्यान दियो। अपने पास सेट लिखा हुआ है। What I did over there, मैं कल एलिमेंट लिखा A, E, I, O, U. I'm separating the elements by commas. Yes or no? Now, can I write like this? Is this wrong? Tell me. Set of vowel letters. Is this wrong or right? It is purely right. की है A E I O U की होंगे आ? They are the vowels. इत्थे भी मैं क्या लिखा? Set of vowel letters. So both are representing same set. Both are sets. Both are representing same set. The difference is there only the way of writing. In one set, what I am doing, I am just writing each and every element. In another thing, what I am doing, I am writing a statement for that particular set. Yes or no? For example, might be in whatever class you are, like +1, ठीक है? तो थोड़ी एक क्लास आ, उधर एक नाम है +1 class. Let's say non-medical आ, so we'll say +1 class non-medical of this particular school. एक तो वही हो गया, एक मैं उस क्लास के कले बच्चे का नाम लिखता, वो था सेम। वो बच्चे सारे भी उसी क्लास में रिप्रेजेंट करने, वो +1 class of non-medical of this particular school भी उसी में रिप्रेजेंट करूँगा। That means the way of writing अलग है। एक बार मैं स्टेटमेंट लिखते, एक चमक अलग एलिमेंट लिखता, बट बोथ आर सेट्स। सो जस्ट बिकॉज ऑफ वे ऑफ राइटिंग वी गॉट 2 forms, tabular, roster. Sorry, I missed one thing. It's set builder form. I will tell you what was roster form. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ कल एलिमेंट लिखा लाइक समवट काइंड ऑफ टेबल फॉर्म, तो उस फॉर्म में बोले जाता है टैबुलर फॉर्म। when I am representing each and every element of that particular set separated by comma, that is called to be tabular form। अगर सेम चीज़ ਨੂੰ मैं एक स्टेटमेंट ਦੀ फॉर्म 'ਚ लिखदा, ध्यान दियो सेम चीज़ ਨੂੰ, दैट मीन ਜਦੋਂ मैं स्टेटमेंट ਨੂੰ सॉल्व करूँगा आई एम गेटिंग दिस 5 एलिमेंट्स ओनली, ठीक है? तो उसਨੂੰ ਕੀ बोले जाता है set builder form। So we can easily convert tabular form to set builder form and set builder form to tabular form। And one thing more, tabular form the एक other name that is called to be roster form। So ध्यान रखियो उत्थे गलत लिखा हुआ सीगा, I was writing a roster form। roster and tabular are used for same thing, that is each and every element जो ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, but जो statement form ਆ that is called to be set builder form, जिन्हें एक्चुअल से सेट बिल्ड किया होया है। इत्थे टैबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल भी मैं कला एलिमेंट होता रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? सो व्हाट इज टैबुलर फॉर्म? राइटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? राइटिंग अ स्टेटमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक है, इस सब क्वेश्चन भी करेंगे कि देन यू विल कम टू नो हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर 2 forms। क्लियर? नेक्स्ट इज okay, you can read it out. What is this? Belongs to. What is this? I think this is symbol that you have seen first time. This is called to be epsilon. Now a symbol, if you are in non-medical or medical or whatever stream of science, you're going to tackle this a number of times। एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन परमिटिविटी, दिस मतलब सिंबल सेम यूज अलग है डिफरेंट थां ते। तो इत्थे अपने कोल ये सिंबल काहदे लई यूज किया जाता? बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल क्यों सिंबल जा लाइक व्हाट इज दिस सिंबल? ऑब्वियस इक्वल्स टू। हुण मैं इक्वल्स टू पा दा, दैट मीनिंग हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, अगर मैं इस तरह 2 लाइन्स पा दा, उसका भी मतलब किया
same one. That means we are substituted this particular word with a symbol. मैं इंग्लिश लिखने की बजाय एक सिंबल रिप्रेजेंट करता बिकॉज आई एम डीलिंग विद मैथ एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वल्स टू लाइकवाइज दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू. इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ व्हाट इज बिलोंग्स टू? ओके, इट्स quite English word. I think you know the meaning of belongs to. Are you belong to your family? Yes, you do. Do anyone else out of your family belongs to your family? It may or it may not. Like belongs to क्या ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ set ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, if something is there in the set, it belongs to the set. If something is not there in the set, it does not belongs to the set. Get me or not? Belongs to means if something is there in the set, it belongs to that set. If something is not there, it doesn't belongs to. For example, if I'm saying A is there, yes, so I can say A belongs to A. Okay, I'm writing U. U है? Yes, that means U belongs to A. What? Let me write P. P है? नहीं है बिल्कुल. So I will say it doesn't belongs to. That means if something is a part of set, it belongs to that particular set. If something is not a part of set, it doesn't belong to the set. But क्योंकि we are dealing with math, it's not easy to write that much sentences of English. So उन्होंने बड़ा simple जो काम किया, they substituted this by a symbol that is epsilon. So I will say instead of writing this, I will say A belongs to A. Instead of writing this, I will say U belongs to A. Instead of writing this, okay, can anyone guess की लिखेंगे अपन? Anyone? Maybe thought education की maybe thought education ने right guess किया हुए. Let me write. अगर equalsly अपन equal बोलना, not equalsly की बोलना, equals with the cross line. Same as there. अगर belongs to है तो not belongs to क्या होगा? Belongs to not. So this is a symbol of doesn't belongs to. Clear or not? Is this? So I think all the terms are clear. What is said? Let me sum up. What is said? Set is a collection which is well defined, well distinguishable and non-repeatable. What is tabular form? When we are writing each and every element of the set is called to be tabular form. When we are writing the same things in a statement form, that is the set builder form. Then if something is a part of that particular set is called to be belongs to. If something is not part of the set, it is called to be doesn't belongs to. We use symbol epsilon for belongs to and epsilon with cross for doesn't belongs to. Is that clear or not? Let us sum up the things with some of questions regarding this. Now, question 1. अच्छा इतने मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. जब एक क्वेश्चन होता है तो कोल है ना, तो pause the video, think about the question, try to solve this. अगर होता ठीक है, अगर नहीं होता तो तुम resume कर ही सकते हो वीडियो, but try it out at least once, ताकि तुम्हें पता लग सके भी तुम्हें कुछ हो रहा, समझ आ रहा या फिर नहीं. समझ आ रहेगा, but can you implement the concept or not, ताकि you can understand yourself well. ठीक है? So question number 1. Now question is, are the following sets? Books written by J.P. Mohendra. Anyone? Second,
Capitals of states of India. Third, most dangerous animals. So let us deal with these three questions. Books written by J.P. Morgan. Is this set or not? It is set. Why? क्योंकि उधर मान लो JP Mahindra ने 1 lakh books लिखिया, मान लो JP Mahindra ने 2 lakhs, although it is not possible, let's say 1000 books लिखिया, but these are well defined. By seeing the book or by the publisher, we can come to know कि केड़ी book JP Mahindra दे. They are well defined. वो गल अलग अपन नहीं पता, but they are well defined. We can easily say this is book written by JP Mahindra. Is that clear or not? Secondly, well defined 10 books रख दो, एक JP Mahindra रख दो, we can easily identify that this is a book written by JP Mahindra. That means this is well defined and well distinguished. Non repeatable automatically जो भी elements लिखोगे हो ही होगा. So this is a set. Now capitals of states of India. ज़्यादा नहीं करता. Let me. Capital of India. Let's say. It is set or not? Yeah, it is set. Capital of India is, you guys know very well. Okay? The capital of India is Delhi. That means this is a set which is well defined and well distinguishable. Most dangerous animal? For sure. It is not a set. Why? Because dangerous har ek da apna ga. It's a feeling based, emotion based answer. And emotion based answer are never well defined. So it is not a set. Is that clear or not? Second, let me deal with a few more questions. I'm given with a set that is 2, 4, 6, 8, 10. The question is this. Firstly, what is this? It's a set. Good. Second, it is well defined? Yeah, every number is well defined. Okay. Third, which form is it? Tabular or set builder? Tabular form क्योंकि कला element लिखे हुआ है with the commas. ठीक है? Now I want to convert this to the set builder form. The set builder form च किमें लिखांगे? थोड़ा बेस खा रहा है मैं तो किमें लिखे जाना होगा. जनरली मैं इंग्लिश लिखने की बजाय मैं कुछ और यूज़ करूँगा x:x. We have taken one object or one particular variable जेड़ा इन्हें सब में डिनोट करूँगा, x2 ने भी डिनोट करूँगा, x4 ने भी करूँगा, 6 ने भी करूँगा, 8 ने भी करूँगा and 10 ने भी करूँगा. Then we have used here columns. इसका मतलब क्या है? Such that. सेम जिमें इसका मतलब बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब इतने किया इट्स एक्टिंग लाइक अ सच दैट मीन्स आई एम सेइंग एक्स सच दैट एक्स मतलब एक्स लिखा एक वेरिएबल जेड़ा इन्हां सारे नूं रिप्रेजेंट करूगा. फिर आई टॉक्ड अबाउट दैट सो आई हैव रिटन सच दैट हुण मैं एक्स बारे स्टेटमेंट लिखूंगा. तुसीं इंग्लिश च सीधा भी लिख सकते सी बट द थिंग इज दैट मैं क्यों इस तरह लिख रहा क्योंकि यू विल फाइंड इन योर बुक एंड at many places भी चीज़ें इस तरह भी लिख दे हो फिर होते तो कंफ्यूज होंगे. दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस दैट हाउ टू राइट एक्स टू नॉट ऑन तो ये जरूरी नहीं है यू कैन राइट वाई नॉट इशू. कॉलन रिप्रेजेंट सच दैट. क्लियर? नो वाई सच दैट वाई. नाउ जस्ट चेक इट आउट. मैं कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, मैं इक्वेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं समथिंग मतलब मैं कल एलिमेंट नहीं लिखना. आई कैन यूज एनीथिंग else than the elements. Now, if you can see, all are even numbers. Yes or no? बिल्कुल. तो even numbers कितने multiple होंगे हमेशा? 2 दे. So I can say जो भी value है, that is multiple of 2. That is multiple of 2. Now, n. मैंने पता है वैल्यूज़ की आ सकती है 2 तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है 1. आई एम राइटिंग हियर. 4 हो सकती है तो n की वैल्यू कितनी हो सकती है 2. 6 वाले n की वैल्यू कितनी होगी 3. 8 वाले n की वैल्यू कितनी होगी 4.
10 वाले n की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर मैं इतने लीव कर देना तो गलत हो जाएगा क्योंकि n कैन बी एनीथिंग। 10 पर था तो 20 होगी विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट, सो आई हैव टू इम्पोज द लिमिट ऑन n एज वेल। सो आई विल से n 1 जब 1 तो किया ग्रेटर 1 जब 1 तो बड़ा 5 जब 5 तो किया स्मॉल जब 5 तो इक्वल जब 5 तो किया बच्चे लेस। इज दैट क्लियर और नॉट? सो n इज 1 to 5 बट मेरे कहानी इतनी भी नहीं खत्म होती क्योंकि 1 to 5 तो इनफिनिट नंबर है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ठीक है। सो पॉइंट इज मैं हर एक चीज़ से जज कर जाना कि मैं करना मैं हर नहीं दसूँगा ठीक है। तब मैंने पता मैं किहड़े नंबर लेना 1 2 3 4 5 आई कैन से इंटीजर्स आई कैन से नेचुरल नंबर्स आई कैन से होल नंबर्स yes or no? So here you have to represent that n is either natural number लिखता हूँ ओके। अगर कोई i दी जगह सॉरी n दी जगह i यूज़ करता है इंटीजर्स स्टिल इट्स ओके। अगर कोई i दी जगह होल नंबर यूज़ करता है स्टिल इट्स ओके। ये नहीं है भी तुसी n ही लिखना गा नेचुरल ही लिखना गा इंटीजर ही लिखना गा। इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन यू कैन राइट एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट बट द थिंग इज दैट आंसर अपने को ही होना चाहिए। इन क्रॉस चेक करा करो बहुत ईजिली कि मैं जस्ट थिंक कि मैं क्रॉस चेक करना गा इन्हें सॉल्व करके देखो। मैं क्या देखिए एन किया नेचुरल नंबर्स ठीक है। नो नेचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे देन एन की वैल्यू किया 1 to 5 तो मैंने पता लग गया मैं नेचुरल नंबर किया 1 to 5 इनू पढ़ो उसनों नहीं देखना इसनों रीड करो ठीक है। 1 2 3 4 5 ठीक है 5 वैल्यूज हो गया। देन मैं ओनू 2 ना मल्टीप्लाई कर रहा यानी कि 1 दा 2 हो गया 2 दा 4 हो गया 4 दा 3 दा 6 हो गया 4 दा 8 हो गया दैट मीन्स 2 4 6 8 10 I'm getting the same value। अगर तुसी नहीं सेम आ रहा दैट मीन्स सम इज मिस्टेक ओवर देयर करेक्ट दैट वन क्लियर। अगेन मैं कह रहा हूँ मतलब दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर आंसर भी मैं ही लिखना था। समवन कैन राइट लाइक दिस एज मल्टीपल ऑफ 2 from 1 to 5 दो तो मल्टीपल 1 to 5 तक लेना का नेचुरली नेचुरल काउंट मतलब नेचुरली काउंट करना 2 तो लेके 1 तो लेके 5 तक 2 1 2 2 2 8 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 हो सकता कोई और भी किसी तरीके ना लिखता। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू राइट द सेम थिंग ठीक है। पर तुम्हें पता होना चाहिए भी मेरा वे ऑफ राइटिंग किया तो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। होपफुली क्लियर है। सो आई एम नॉट डीलिंग विद मोर क्वेश्चंस और एनीथिंग क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी। सो गो थ्रू दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स read each and everything about that, then pick up your book, go through the exercise, first exercise, find if you can solve few of the questions। अगर मिल जाए ठीक है नहीं मिल देता in later videos I will share few questions and worksheets as well to solve ठीक है। उन्होंने करो in case of any problem my number is there in the description ठीक है। उससे मैंने व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आई विल टेल यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। और अगर ज़्यादा क्वेरीज हुई हैं आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर डाउट। इज दैट क्लियर और नॉट ठीक है। सो गो थ्रू दिस कीप रीडिंग ठीक है कीप लर्निंग स्टे ट्यून्ड स्टे सेफ। वन थिंग मोर शेयर दिस थिंग विद योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि इस पर्टिकुलर टाइम के बच्चे जिथे बहुत बड़ा एपिडेमिक चल रहा है हर कोई इस चीज़ का बेनीफिट ले सके ठीक है ना। शेयर एज मच एज पॉसिबल। सेकेंडली फॉर श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।